So now, see, we have already covered. तो मैंने आपको बताया था, see, whenever you suppose I want to measure, I want to know the difference between two things. ये ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा है ना? This drug is better or that drug is better. तो मैंने कहा कि we'll take up the outcome measure. तो outcome measure जब हम लेते हैं, तो suppose I want to test between two drugs, or I want to in public health I want to test between two different type of techniques. कि भाई लोगों को आप कम्युनिटी को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, बाय गिविंग मनी और बाय गिविंग कैश कैश प्राइज, और सपोज बाय गिविंग काइंड टाइप ऑफ अ थिंग, मींस आपने कुछ वाउचर्स दे दिए, कोई कूपन्स दे दिए। तो ये आपको पता करना है। तो आपने क्या किया, ग्रुप ए ग्रुप बी ले लिया। ग्रुप ए ग्रुप बी में आपने आउटकम मेजर्स ले लिए, आपने मोटिवेशन देख लिया, आपने देख लिया कि हैप्पीनेस देख लिया, आपने सेटिस्फेक्शन लेवल देख लिया। या फिर अगर अगर हम दो ड्रग की बात कर रहे हैं, सो वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द पेन लेवल, वेदर आफ्टर टेकिंग ड्रग ए द पेन हैज कम डाउन, by taking drug B whether the pain has come down, what is the suppose आप शोल्डर की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव किया या डिक्रीज किया या सेम रहा। एंड आप कोई भी फंक्शनल डिसेबिलिटी इंडेक्स ले लीजिए, कि आपको शर्ट पहनने में दिक्कत तो पहले हो रही थी, अब दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको नहाने में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको कपड़े पहनने में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। So by this, so so you get group A, suppose ग्रुप ए में हमने 20 पेशेंट्स लिए, ग्रुप 2 में 20 पेशेंट्स लिए। ग्रुप ए और बी में अब हमको डिफरेंस करना है, तो हमने जो पेन का इंडेक्स था, पेन वैस मेजर कर लिया हमने, बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, अगेन रेंज ऑफ मोशन बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट, फंक्शनल इंडेक्स बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट। उसी तरह हमने ग्रुप बी में भी बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट, बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट, बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट, हमने तीनों, और उसको हमने फिर उसका हमने एक मीन वैल्यू दे दिया। जैसे ग्रुप ए के अंदर फर्स्ट पेशेंट ने कहा मेरा पेन 9 था, आफ्टर ट्रीटमेंट मेरा पेन 7 पे आ गया, सो डिफरेंस कितना का है, 2 का आ गया। सो सेकंड पेशेंट ने कहा मेरा दर्द 9 था, आफ्टर ट्रीटमेंट मेरा 4 पे आ गया, तो 9 माइनस 4 इज 5 का। तो इस तरीके से हमने ए से ले 1 से लेकर 20 पेशेंट ले लिए, उनका हमने मीन निकाल लिया। तो हमने कहा जो मीन मीडियन मोड मैंने आपको जो पढ़ाया था वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का मतलब है कि जो जो ये चेंज आया, ये चेंज को ना डिस्पर्शन, तो वो चेंज को हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। वो चेंज को आप कैसे मेजर करेंगे, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। अगर मीन आप निकाल रहे हैं तो यू कैन मेजर इट विथ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप मीडियन निकाल रहे हैं तो मीडियन को आप इंटर क्वार्टाइल डेविएशन से निकालते हैं ना। और अगर मोड है, मोड को आप बेसिकली रेंज से निकालते हैं। तो यू हैव गॉट थ्री टर्म्स: स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन एंड योर रेंज। ओके, सो ये हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में मैंने आपको वहां पे ही पढ़ा। अब जब हम इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, हम इसको कैसे दिखाते हैं? सो देर आर टू कॉन्सेप्ट, वन इज स्क्यूनेस एंड अदर इज कर्ट्यूसिस। ओके, तो स्क्यूनेस और कर्ट्यूसिस क्या होता है, तो लेट अस अंडरस्टैंड। तो वो हमने अभी मतलब बताया। और उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, मैंने अभी जैसे बोला कि चलो स्क्यूनेस और कर्ट्यूसिस बताने से पहले हम लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि मेरे ख्याल से हमने स्क्यूनेस एंड कर्ट्यूसिस हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। हैव आई एक्सप्लेन्ड स्क्यूनेस एंड कर्ट्यूसिस क्या होता है? या शालिनी, प्रियो वाला हमने कर लिया था। Sir, I was not present in last class. That's why I don't know, sir, ओके, exactly. प्रियो वाला तुम्हें याद है बेटा? डू यू रिमेम्बर? No, sir. Actually, I was not present last time because of अच्छा चलो I ठीक है, अब अगर texted नहीं होगा तो last मैं एक time. बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब जी पहले सर। स्टैंडर्ड डेविएशन को समझ लेते हैं। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द, नाउ सपोज अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो आप उसका एक डेफिनेशन बता दीजिए, उसका सिंबल बता दीजिए, उसका वो बता दीजिए, और उसका फायदा बता दीजिए, बस। सो आपको आउट ऑफ 5 कोई भी आदमी 4 नंबर दे देगा। सो बिकॉज सी हाउ टू अटेम्प्ट इन एग्जाम, अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिखने के बाद में उसके यूजेज के बारे में लिखिए, फिर उसका अगर कुछ फॉर्मूला है तो उसको लिखिए, और फिर उसकी सिग्निफिकेंस लिख लीजिए।
तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर 15-20 नंबर का क्वेश्चन है और 15 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 3 से 4 पेज भर के आइए, 5 पन्ने भर के आइए। पहला फर्स्ट पेज, उसके बैक साइड वाला पेज, फिर नेक्स्ट पेज, उसके बैक साइड वाला पेज। इस तरीके से 2 से 3 पन्ने भर के आइएगा, तो कम से कम भी 15 नंबर में से आपको कोई भी आदमी 10-12 नंबर दे दे। ठीक है ना? तो रिलेवेंट चीजें कोशिश करिएगा। अगर कभी कभी यह होता है इधर उधर कभी थोड़ा चेंज करके फिर उसको वापस आप जस्टिफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये मैं आपको मार्क्स लेने की तरीके बता रहा हूँ। ठीक है? Yes. एट द सेम टाइम यू शुड, अगर आपके पास में नॉलेज है, आपको आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है, तो डेफिनेटली देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ आता, और हमेशा इस तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा, जो सबसे अच्छा सबसे पहला वो क्वेश्चन कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है। दूसरा क्वेश्चन आप वो कीजिएगा जो आपको थोड़ा कम अच्छा आता है। ठीक है? अच्छा, अगेन पीछे से वो क्वेश्चन कीजिएगा जो आपको ठीक ठाक आता है। बीच में वो क्वेश्चन डालिएगा जो आपको बिल्कुल नहीं आता। ये भी आपको मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ स्कोरिंग का। ठीक है? तो कि जब आपका पहला क्वेश्चन अच्छा होता है तो आप पहले ही नंबरिंग कर लीजिएगा, जो आपको सबसे अच्छा कौन सा आता है, उसके बाद में कौन सा आता है, फिर जो बीच में बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि जब आप एग्जामिनर को मुश्किल से 5, जब आपका हजारों हजारों पेपर होते हैं, तो मुश्किल से उसको 5-7 मतलब, तो आप जब वो पहला आपने अच्छा आंसर लिखा तो एक इमेज बना लेता है, नहीं यार स्टूडेंट को नॉलेज है। दूसरा, जब आपने थोड़ा कम भी वो लिखा था उसमें, फिर आपको तो उसका हाथ खुल जाता है कि 15 में से 11 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, है ना? और कुछ नहीं लिखोगे, पहला क्वेश्चन ही एकदम बर्बाद लिखोगे, सेकंड क्वेश्चन तो उसको दिमाग में आ जाए, नहीं यार ये ऐसे नालायक स्टूडेंट। इज इट क्लियर? समझ आ गया Yes, स्कोरिंग का तरीका? ओके। Yes, yes, sir. sir. Okay, then let us now understand what is standard deviation. It is a positive square root of the arithmetic mean. तो आप पहले मीन निकालते हैं। जो जो आप मीन निकालेंगे उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाला जाता है ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। तो जब आप जो वैल्यू निकालेंगे उसमें से, क्योंकि मान लीजिए डिफरेंस जो है, तो वो डिफरेंस को कैलकुलेट करने को स्टैंडर्ड डेविएशन, सो द वर्ड इज स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन मीन्स कितना डेविएट हुआ फ्रॉम द नॉर्मल रेंज। मान लीजिए कि आप, जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास के अंदर 10 बच्चे थे, 10 में किसी के नंबर बायोस्टैट्स में आउट ऑफ 50, किसी के 10 आए, किसी के 20 आए, किसी के 15 आए, किसी के 13 आए, किसी के 25 आए, किसी के 45 आए। अब क्लास का मीन सपोज हमने कैलकुलेट किया, हमारा क्लास का मीन निकल गया से 25 मार्क्स। तो हमको अब ये देखने की जरूरत है कि 25 मार्क्स से कितने मार्क्स, जब आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे वो मार्क्स वेरी कितने कर रहे हैं, है ना, फ्रॉम द मिड मिड रेंज। तो उससे क्या होता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्लास मतलब एवरेज क्लास नालायक है या मतलब होशियार क्लास है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब डेविएशन को भी उन डिफरेंसेस को भी आप स्टडी करके उसको स्टैंडर्डाइज एक नंबर देंगे कि ज्यादातर जो वैल्यूज हैं वो इतना इतना रेंज कर रही थी। जैसे कि 11.34 प्लस माइनस 2.2, मतलब जो वैल्यूज हैं वो 11 से 2 बढ़ा दो 13, और 11 से 2 घटा दो 9। तो 9 और 13 के बीच में सारी वैल्यूज थी इसकी। तो उसके बेसिस में अगर आपका वो सेटिस्फैक्शन है तो आप उसको बोलोगे नहीं भैया सेटिस्फाइड। सो तो जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, इट इज डिनोटेड बाय द सिग्मा सिग्मा लेटर। एंड हाउ टू फाइंड आउट, तो यस इस तरीके से आपको कोई निकालने के लिए नहीं बोलेगा भाई, आपको इस फॉर्मूला बताना चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ओके, सो दिस इज बेसिकली। और जो हम इसको कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं उसका। मीन जब हमने निकाल लिया, उसके बाद में हम हर एक वैल्यू को उस मीन से वो करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कितना डेविएशन है। फिर उस डेविएशन को हम उसको स्क्वायर रूट कर देते हैं और उसका समेशन निकाल देते हैं। तो हमने फॉर्मूला लिखा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो आप उससे उसको आपको डिवाइड कर देना होता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। सो सो नाउ टेक दिस एग्जांपल। तो जैसे 14, 22, तो वैल्यूज हैं क्लास के अंदर, सपोज 14, 22, 9, 15, 20, 17, 12 और 11। ठीक है? तो ये हो गया। तो अब मान लो कि ये आपके 25 में से ये मार्क्स हैं बच्चों के। क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देवर 8 स्टूडेंट्स इन द क्लास, उनके इतने नंबर आए 25 में से।
तो अब 14, अब इन सब का मीन कैसे निकल गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 120 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना मीन हो गया 15। ओके, तो मीन निकालने के बाद में अब आपने कहा कि इंडिविजुअल, तो हमने लिखा फॉर्मूला x माइनस एक्स बार। तो x मतलब होता है इंडिविजुअल नंबर, बार मतलब होता है वो नंबर जो आपने फाइंड आउट किया। तो 14 माइनस 15 इज -1, 22 माइनस 15 इज 7, 9 माइनस 15 इज -6, 15 माइनस 15 is 0, 20 minus 15 is 5, 7 minus 15 is 2, and then 17 minus 15 is 2, 12 minus 15 is -3, 11 minus 15 is -4। तो इस तरीके से फिर उसका हमने स्क्वायर रूट कर लिया, तो स्क्वायर रूट करके हमारे पास वैल्यू कितनी है 140। तो हमने क्या फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला हमने स्क्वायर रूट कर दिया, और इसका बेसिकली उसके बाद में हमने कहा कि x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी 8, तो निकल गया अंडर रूट ऑफ 17 माइनस 4, दैट मीन्स 4.18। तो मीन हमने कितना निकाला था, मीन हमने निकाला था इज मीन्स 15। सो वैल्यू क्या हो गई 15 प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब 15 प्लस माइनस 4.1। तो जितने भी वैल्यूज हैं वो 15 और 4.18 के बीच में लाई करती है। इज इट क्लियर? हाँ जी, इज इट Yes, क्लियर टू sir. एवरीवन? एनी Yes, sir. डाउट? ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइंड इट आउट। सो उसके बाद में उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जो वेरिएशन आपने निकला, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसमें क्या कहता है मीन डिवाइडेड बाय एक्स बार, ओके, इनटू 100, तो वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया। सो मीन, अब जैसे मीन डिवाइड बाय एक्स बार मैंने मीन बता दिया, और ये हो गया। सो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार इनटू 100। सो अब देखिए आपके सामने दो फैक्ट्रीज हैं ए एंड बी। तो एवरेज फैक्ट्री के अंदर, मतलब जो एवरेज सैलरीज आप देते हैं किसी को, वेजेस जो देते हैं, वो ए देता है 34.5 और बी देता है 28.5, और दोनों में स्टैंडर्ड डिवीजन जो है 4 और 5.5 का है, 4.5 का है। नंबर ऑफ वर्कर्स जो ए में है वो 476 वर्कर्स हैं, और जो बी में है 524 है। तो ये वैल्यूज मेरे पास जो पता है। अब मुझे किसी ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, ए ज्यादा सैलरी देता है या बी की ज्यादा सैलरी देता है, ठीक है ना? और दूसरा बताओ कि ए वाला सैलरी, ए में ज्यादा वेरिएशन है सैलरी देने में या बी में ज्यादा वेरिएशन। ओके, सो वी वांट टू, तुम्हारे सामने इस तरीके का क्वेश्चन होगा और हमको पता करना है इमीडिएटली। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा N1 में, मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी वन कितना था 476, मीन वेज कितना था 34.5, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना था 5। एज फार एज योर एन इज सेकेंड ग्रुप इज कंसर्न ना 524, और जो मीन था उसका 28.5, और जो उसका स्टैंडर्ड डिवीजन था वो 4.5 है। तो टोटल वेज पेड बाय फैक्ट्री ए, तो हमने कहा 34.5 इंटू 476, तो आपको ने जो टोटल नंबर ऑफ कितना था डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय टोटल एम्प्लॉयज कितना था, और उसके बेसिस पे आपका कितना आया 16.422 उसकी फिगर है। और उसी की तरह आपने बी के अंदर आपने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपका 50 टू 524 कर लिया, और 28.5 आई, 28.5 जब उसकी आई, और तो आपको पता चल गया कि मोर सैलरीज जो है वो ए वाला ज्यादा तनख्वाह दे रहा। ओके, इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? कोई चीज नहीं समझ आई? Clear, sir. ओके, Yeah, we have to by heart the formulas and all. नो, ओनली वहां पे रिटन क्वेश्चन आएगा, कोई आपको मैथमेटिकली कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं देंगे। सो Okay. ओनली थिंग इज यू शुड रिमेम्बर द फॉर्मूला। यस यस, Oh, इतना oh, कुछ oh. वो नहीं, ये मैंने Sir, आपके we कौन सा have जब आप to, हैं sir, do we have to give the examples? Like एग्जांपल्स, इफ you यू have explained. यू कैन, यू मे नॉट ना, वो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जस्ट 4 पॉइंट लिखना, 5 पॉइंट लिखना, ठीक है। हर एक Hmm. अगर पॉइंट का अगर 5, अगर 0.5 मार्क्स भी, अगर तुम्हारे को 5 नंबर का क्वेश्चन है, 8 9 पॉइंट लिख लेते हो, तो आपको आराम से कोई भी 5 में से 4 दे देगा, सिंपल बात है, ठीक है। अच्छा सर, बट स्टिल, सर, हम्म सर वो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चंस नहीं आते हैं।
नहीं नहीं, कैलकुलेशन वाला कुछ नहीं आएगा, और आएगा भी तो बहुत जनरल कैलकुलेशन आएगा, हाँ, मुझे पूछेंगे। वही टेंशन था सर, बाकी तो सब हो नहीं जाएगा। नहीं 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 नहीं, मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, और बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ओके बस। सर। हम्म। ओके, थैंक यू हाँ सर। हाँ, इतना कोई घबराने वाली चीज नहीं। ओके। यस सर। ओके, तो उसके बाद में तो आप जब डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने बोला कि उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन था 5 था, 34.5 एवरेज वेज था, तो स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय 34.5 इंटू 100, तो वीकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस वर 14.49। और बी तो कौन सी कंपनी ज्यादा वेज पे आउट कर रही थी, कंपनी बी। सो इस तरीके से मतलब आपको मैथमेटिक्स से ये निकालने में हेल्प मिलता है, ठीक है ना। सो दैट इज, देन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस क्या का मतलब होता है, लैक ऑफ सिमेट्री। मतलब क्लास एक, जैसे कि मतलब हमने बताया कि ये वाला लगा, ये, तो अब क्या है कि दो क्लास इस तरीके से, दैट मीन्स द क्लास इज यूनिफॉर्म, सारे सारे बच्चे। बट सपोज क्लास अगर ऐसी रही, मतलब मार्क्स क्लास में, तो यहाँ पे 10 नंबर, 20, 30, 40, 50 अप टू 100। सो मेजोरिटी क्लास को ये समझ आता है कि आपके जो क्लास के बच्चे हैं, जो 70 to 90% वाला क्राउड क्लास, दैट इज नोन एज स्क्यूनेस। इज इट क्लियर? तो लैक ऑफ सिमेट्री, तो नाउ सपोज अगर ये, और अगर मैं ऐसे बना दूं तो इसका मतलब जो है, या सॉरी, इसको ऐसे बना दूं तो मतलब क्लास के ज्यादातर बंदे जो हैं उसके कम नंबर थे। दिस इज नोन एज स्क्यूनेस, दिस इज लैक ऑफ सिमेट्री। ओके, तो हम क्या समझते हैं इससे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस? So we study skewness to have an idea about the shape. Okay, so about the shape of the curve. So shape of the curve से हमको बहुत कुछ समझ आ जाता है कि हमारा क्या टाइप का डेटा है, उसका हम क्या सीखना चाह रहे हैं, what we are trying to understand out of it. So skewness will give us an idea. So skewness जब हम बात करते हैं तो it is a symmetrical distribution. So symmetrical distribution means कि हर चीज symmetry है, and so it can be positively skewed or negatively skewed. So again, what is important is the distribution. So when you say as a symmetrical distribution, that means in terms of biostatistics, symmetrical distribution का मतलब है mean, median and mode are the same. मतलब जो they coincide. So the value of mean will coincide with median value will coincide with your mode. So the spread of the frequency is the same on the, so अगर आप वो बना लीजिए, अगर आप ग्राफ के फॉर्म में देख लीजिए, तो राइट और लेफ्ट आर जक्स्टा पोस्टिंग ऑन ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के पूरक है। सो दैट इज बेसिकली मीन मीडियन मोड, वेयर मीन इज बेसिकली द, सो मीन मीडियन मोड जहाँ पे एक दूसरे कोइंसाइड करते हैं, तो जहाँ पे कोइंसाइड करेगा तो वहां पे आप इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ओके, एंड अगर पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो टुवर्ड्स द राइट, अगर नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो टुवर्ड्स द लेफ्ट। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि उस केस में अगर मान लीजिए कि हम इसको इस तरीके से बनाएं कि ऐसे करके, एंड इस तरीके से वैल्यू, तो दैट इज टुवर्ड्स द राइट। तो यहाँ पे क्या है, मीन मीडियन मोड। सो अगेन मीन मीडियन मोड, इट हैज टू बी थॉट ऑफ कि ये कितना इफेक्टिव है in understanding the entire thing. So in the positively skewed, the frequencies are spread out over the large range of values on the right hand. तो वो large range of values on the right hand side जाती है। अगर आप वैल्यू कम है तो it is going on the left hand side. Is it clear? यस सर। Okay. So ये, so on the right hand side it is positively skewed, on the left hand side it is negatively skewed. Okay, so in the negatively skewed distribution, जैसे मैंने कहा, the frequency is spread out on the greater values on the left hand side. So more it will more towards the left hand side, and on the right hand side it will more towards the right hand side. So ये है. So how do you measure skewness? So there are different methods. So one of the method is Carl Pearson coefficient of skewness.
कि दोनों में कितना डिफरेंस है। अच्छा, सो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या है? मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको मीन पता है, आपको मोड पता है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन डालेंगे वैल्यू, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वो निकल आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को और कैसे डिफाइन करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू थर्ड मीन माइनस मीडियन। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय मीडियन माइनस मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो जाता है। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस? बड़ा सिंपल है फॉर्मूला, फॉर्मूला के बेसिस पे ये चीज निकाला जा सकता है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है किसी का, आपको मीन मीडियन पता है, तो आप आराम से उसका स्क्यूनेस पता कर सकते हैं, तो वो कितना स्क्यूनेस कर रहा है। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? Yes, sir, clear. अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे डेटा है अगेन मार्क्स है, सपोज आउट ऑफ 25 30 में मार्क्स है। तो पहले स्टूडेंट के 25 मिले, दूसरे के 15, 23, 40, 27, 25, 25, 20। तो सो नाउ वी पुट द अगेन द वैल्यूज, उसको हमने डाला, हमने उसमें से मीन कितना निकला 223, टोटल नंबर ऑफ कितना 9, तो 223 डिवाइडेड बाय 9 विल कम टू बी 24.8, 23.8 आएगा, मतलब वो फिर आप उसमें से स्टैंडर्ड डिवीजन निकाले। स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब जो हर एक जो आपका वो आया है उसके बेसिस पे आप पहले एक्स माइनस एक्स बार, तो 25 माइनस मीन कितना आया था आपका 24.8, तो ये 25 माइनस 24.8 0.2 9.8 1.8, तो ये सारा का सारा आपका बेसिकली उसमें से अब हमको मीन निकालना है। मीन में से अब हमको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो एक्स माइनस एक्स बार ये सारा कर लिया, उसका स्क्वायर रूट कर लिया, तो 361 आ गया, 361.56 डिवाइडेड बाई एन। तो एन वो करने के बाद में टोटल नंबर ऑफ 9 आ गया, 9 हो गया, तो 40.17 इज इक्वल टू 6.3 आपका वो हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। मोड है हमेशा 25 है, क्योंकि मोड विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ values that are basically coming over a time, so that is mode। तो इस तरीके से आपको ये चीज आ जाएगा। सो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन इज माइनस मोड डिवाइडेड बाय एसडी का। ओके, तो ये मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एसडी दैट इज योर स्टैंडर्ड डिवीजन। तो अगर आपके इसमें फॉर्मूला में दिया हुआ है, फॉर्मूला के बेसिस पे आप आराम से उसका 0.03 आपका उसका कोफिशिएंट। इज इट क्लियर? Yes, is it clear to everyone? Any doubts in this? Yes, sir, clear. Sir, my connection can cut anytime because of the low battery. We don't have light Okay. morning. Why don't you just put up a battery? Huh? Sir, we don't have light since morning because of the storm and the Oh my God. Okay, okay. yeah. ठीक है। ओके, उसके बाद कर्ट्यूसिस होता है। अब कर्ट्यूसिस जो होता है वो हम बोलते हैं पीकनेस ऑफ कर्व को बोलते हैं, ठीक है, कि कितना पीक है। तो अब द मीनिंग मींस इट विल टेल अस द एक्सटेंट टू विच द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर पीक्ड। ओके, सो इफ इट इज मोर लाइक दिस वन ब्रैकेट, इस तरीके से ना, तो वी कैन सी normal is this is normal system, like, तो ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, और अगर आप उसको देना है तो ऐसे बनाते हैं, और ऐसे बनाते हैं, सो लाइक दिस। सो अगर वो मोर फ्लैट है तो उसको प्लैटिकर्टिक बोलते हैं, अगर ये बीच में सेंट्रल है तो मीजोकर्टिक बोलते हैं, और अगर उसमें वो है, अगर ऊपर तक है तो उसको लेप्टोकर्टिक। सो देर आर थ्री कंडीशंस व्हाट इज प्लैट मींस प्लैटिकर्टिक। प्लैटी वर्ग हैज कम फ्रॉम प्लेटू, क्योंकि ये प्लेटू की तरह आपको नजर आएगा ना, दिस इज लाइक अ प्लेटू, सो दैट्स व्हाई इट्स पी। इस प्लैटिकर्टिक अगर आपको वोल्केनो की तरह नजर आता है, दैट इज नोन एज मीजोकर्टिक, और अगर एकदम टॉप लेवल पे नजर आता है, दैट इज लेफ्ट। इज इट क्लियर? अच्छा, इज इट क्लियर?
Any doubts? Yes, sir. Clear. Okay, good. So with this we have finished. ये हमको समझ आ गया अब. अब हम okay. Is the screen visible to everyone? Yes, sir. अब हम सेकेंड लास्ट टॉपिक करेंगे which is basics of hypothesis testing. Okay. Just give me 2 minutes. हाँ अभी शुरू करते हैं इसको. ओके. सो हाइपोथेसिस से क्या समझते हैं आप? व्हाट इज हाइपोथेसिस? क्या बताया था मैंने क्लास में? यस. कौन बताएगा? व्हाट इज हाइपोथेसिस? यस प्रियोबाला. क्या होता है आपके हिसाब से हाइपोथेसिस? क्या होता है? शालिनी. Sir, it should have some limitation point uh, before starting an investigation. So hypothesis means making a simple assumption. जैसे seat belt. Is there any correlation between seat belt and accident? So आपने कहा नहीं भैया कोई कोरिलेशन नहीं है. किसी ने बोला नहीं भैया रिलेशन है. सीट बेल्ट पहनोगे तो एक्सीडेंट नहीं. या सिंपली किसी ने बोला इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन डायबिटीज एंड हार्ट अटैक्स? तो लोगों ने बोला, किसी ने बोला अरे नहीं यार कोई रिलेशनशिप नहीं. अगर शुगर बढ़ जाती है तो इसका जरूरी मतलब नहीं कि हार्ट अटैक आएगा. बट जिन लोगों को शुगर है, क्या उनके केस में उनको ज्यादा हार्ट अटैक आता है? सो दैट मीन्स इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन शुगर मीन्स ग्लूकोज लेवल एंड योर कोलेस्ट्रॉल, राइट? सो इसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं बेसिकली ना. तो हाइपोथेसिस तो आपको हाइपोथेसिस तो आप क्योंकि पब्लिक हेल्थ के फील्ड में इट इज ऑल अबाउट लाइक यू आर मेकिंग हाइपोथेसिस लाइक एज ऑफ द मदर एंड वेट ऑफ द चाइल्ड, कि क्या अगर माँ की एज कम होगी तो वेदर द वेट ऑफ द चाइल्ड विल बी लेस, या वेदर योर टोबैको कॉजेस कैंसर. अगर जो लोग टोबैको खाते हैं या जो लोग कैंसर मतलब या जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको कितना परसेंट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दिस समथिंग लाइक दिस. तो आपको एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो हम क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, पी वैल्यू क्या होता है.
सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, पावर सैंपल क्या होता है। तो वेरिएबल मैंने आपको बोला था, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि वेरिएबल जो होता है इट इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ अ पीपल और ऑब्जेक्ट दैट टेक्स टू और मोर वैल्यूज। सो नाउ सपोज आपने कहा कि वेरिएबल इज सम कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑलवेज टेक डिफरेंट फॉर्म्स विद इन द स्टडी। ओके, सो वेरिएबल जो अपना फॉर्म बदल लेता है, जैसे सपोज आप जो मेजर करना चाह रहे हैं, लाइक सपोज आप आउटकम मेजर निकालना चाह रहे हैं, आपने तो आपके पास दो वेरिएबल हो, एक आपका जो आपने ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको आप इंटरवेंशन बोलते हैं, या उसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। सो सपोज यू आर कंपेयरिंग बिटवीन टू ड्रग्स, दैट मींस द ड्रग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड and suppose what you are measuring, you want to measure that whether the drug really works in fever or not. So you might take range of means the temperature on that person, or you can take see range of motion. ओके, सो यू विल से दैट जो इंटरवेंशन आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इंटरवेंशन है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आप जिसके वजह से आपको पता चलेगा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। सो वेरिएबल इज व्हाट, वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स विद इन अ स्टडी। तो जिस टाइप का स्टडी है उस टाइप का आपका वेरिएबल हम कंसिडर कर सकते हैं। कांस्टेंट उसके अंदर वो है which won't change and it will remain the same. And if the differences between range of motion variables for men and women, then sex is a variable. That means अगर आप मेल और फीमेल में differences find out कर सकते हैं, then your gender can become a variable. So if the range of motion for female also are studied, अब आप range of motion से females की study करना चाह रहे हैं, तो then basically the gender will become a constant because you're not taking the gender of the male population. Is it clear? So whenever you are going to जब भी आप experimental study करते हो, तो मैंने बताया experimental study में what you are trying to do, you are going to compare between two drugs, you are going to compare between two treatment methods, you are going to test between two different type of conditions. Okay, is it clear? Any doubts in this? Yes, sir. Okay. सो वेरिएबल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो आउटकम मेजर्स के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कि आपको सो लाइक सपोज यू सेड विच मेडिसिन इज बेटर, so you might say this medicine, A medicine is better. Why it is better? Because see, first of all it is cheap. Secondly, even though it is cheap, it is working very well. The patients, okay, so the patients are happy with this drug. It has got least side effects. So these are the different type of qualities. तो आप आपसे पूछा जाता है कि okay, compare between these two drugs and let me know. So dependent variable जो है वो आपका जो outcome measures है, they are dependent because they are dependent on the type of drug. अगर A ड्रग ज्यादा अच्छा काम करेगी तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल सारे के सारे बेटर मिलेंगे, और अगर ये ड्रग अच्छा काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब सारे के सारे वेरिएबल जो आपको वेरिएशन मिलेगा। तो dependent variable is always your outcome measure and independent variable is always your intervention. Never forget this. Dependent variable is always your outcome measure and independent variable is always your treatment. Is it clear? Yes, sir. ओके, एंड कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है? कंट्रोल वेरिएबल वो वाला वेरिएबल होता है जो अगर आप हटा भी देते हैं तो बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता। सो इधर लाइक द वेरिएबल कैन बी मूव्ड विद द, सो जब भी आप इसका वेरिएबल है कंट्रोल वेरिएबल हुज पोटेंशियल टू इम्पैक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल आप जो ले रहे हैं, जो आप आउटकम मेजर्स ले रहे हैं, उसके उसको आपको जो इफेक्ट कर सकता है उसको बोलते हैं आप कंट्रोल वेरिएबल, बिकॉज इट इज एबल टू कंट्रोल द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो जब भी आप गाइडलाइंस यूज करेंगे तो आप सब यू विल ऑलवेज ट्राई टू सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, व्हाट आर द डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल you are going to see, dependent variable you are trying to explain, okay, and independent variable occurs in time. So independent variable ने कहा जो treatment method होता है, तो independent variable is often seen as influencing the dependent variable. Is it clear?
ओके, सो अगर मान लीजिए एग्जांपल्स ले लेते हैं, इफेक्ट ऑफ लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड ऑन पेन एंड टिश्यू। अगर मान लीजिए आप अगर आप ले लें इफेक्ट ऑफ टू डिफरेंट मीन्स ऑफ से आरसीटी, दो अलग अलग टाइप के आरसीटी ऑन पेन एंड टीचिंग इश्यूज among dental caries patient. So what will be the dependent variable? What will be the independent variable? Yes. Yes. जैसे आपने बोला ना यहाँ पे इफेक्ट ऑफ लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड ऑन पेन एंड टिश्यू हीलिंग ऑन टेनिस एल्बो पेशेंट. So what is the dependent variable? What is the independent variable? Yes, who will tell me? Tell me. डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? यस, शालिनी बताओ. So high frequency ultrasound will be the independent variable. ओके, why high frequency ultrasound will be the independent variable? Why? Yes, Shalini, why? Yes, MW, why? Athar Singh. Yes. बताओ बताओ. Any idea? Because see, independent variable are always a treatment. Interventions को बोला जाता है ना. बिकॉज ट्रीटमेंट देने के बाद व्हाट विच इज गोइंग टू चेंज. अगर अगर दवाई खानी है, ये दवाई ज्यादा अच्छी है, बी दवाई ज्यादा अच्छी है, तो कैसे पता चलेगा? जिस दवाई से बुखार कम होता है. सो बुखार आना इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो जो इंटरवेंशन यू आर गोइंग टू गिव, द ट्रीटमेंट व्हाट यू आर गोइंग टू गिव इज योर ऑलवेज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. And the other type of outcome measure which tell you much how much improvement it is there, it is always known as dependent variable. So independent variable is always your intervention and dependent variable is always your outcome measure. Is it clear? Okay. Is it clear to everyone? समझ आई बात? Yes, शालू, शालिनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. You should not get confused in this. Hello. Am I audible? Yes, Shalini, am I audible? Are you able to understand? Any doubts? Why I'm not getting any response? What happened? क्या हुआ शालू? What happened, Shalini? MW? प्रियोबाला? Yes, sir. समझ आ रहा है what I'm trying to tell you? No, sir, I was disconnected, sir. Can you please repeat? Okay, okay.
I am asking what is a dependent variable, what is an independent variable, whatever I have discussed, have you understood? So please clear it डिपेंडेंट again. वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल ऑलवेज बी द इंटरवेंशन. जो आप ट्रीटमेंट दोगे वो हमेशा इंटरवेंशन जो होता है वो हमेशा आंख बंद करके उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखिए. और Yes, sir. जैसे आप हमको इफ यू आर कंपेरिजन बिटवीन टू ड्रग्स ए एंड बी, Mm-hmm. पैरासिटामोल एंड ब्रूफिन, तो Mm-hmm. लोगों ने पूछा पैरासिटामोल खाने से बुखार कम होता है या ब्रूफिन खाने से कम होता है, तो आपने कहा भाई पैरासिटामोल तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक तीनों प्रॉपर्टीज हैं, बट ब्रूफिन का तो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, राइट? So as a result of which you are trying to comparison. So whatever treatment you are giving, it is always an intervention by which you are saying that this thing is effective. That is always your dependent variable. That means the outcome measure. जैसे आपका आपने फ्रोजन शोल्डर की बात की, तो फ्रोजन शोल्डर में आपको पेन कम हो गया, तो दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. सिमिलरली आपका रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो गया, दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. आपका फंक्शन इंडेक्स इंप्रूव हो गया, दैट इज अ dependent variable. So dependent variable are always the outcome measure and treatment is always the independent variable. Please do not forget this thing. Yes, sir. Is it clear? Okay. Yes, sir. Mm. Okay. Similarly, the number of books read by a child per day positively affects the child's work recognition. तो एक बच्चा जितनी किताबें पढ़ता है पर डे, उससे उसका रिकॉग्निशन पैटर्न बढ़ता है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? द नंबर ऑफ बुक्स रेड. एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? वर्क रिकॉग्निशन. ओके. वर्ड रिकॉग्निशन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट जो बुक्स हो गया. और कंट्रोल वेरिएबल्स यहाँ पे जेंडर हो गया, डज नॉट मैटर वेदर समबडी इज मेल और फीमेल, इट डज नॉट मैटर वेदर द बर्थ ऑर्डर. ओके, सो दिस इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट. तो ये आप यहाँ से देखिए एग्जांपल. हाउ इफेक्टिव इज थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड इन द ट्रीटमेंट. तो जो भी ट्रीटमेंट होगा उसको हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख दीजिए. जो जो जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसको डिपेंडेंट वेरिएबल लिख दीजिए. ओके. So this is ultrasound. So how effective is therapeutic ultrasound in the treatment of heel pain? So ultrasound जो हो गया वो independent variable होगा, heel pain जो हो गया वो dependent variable होगा. Effect of high voltage pulse current and alternative current on macromolecular leakage. So current जो हो गया वो high altitude means independent हो गया. करंट जो हो गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हो गया मैक्रोमोलिकुलर लीकेज हो गया. इफेक्ट ऑफ पोजीशनिंग एंड एक्सरसाइज ऑन इंट्राक्रेनियल प्रेशर. तो पोजीशनिंग एंड एक्सरसाइज जो हो गया वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो हो गया वो आपका डिपेंडेंट. इज इट क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस? Yes, sir. Clear. ओके. सो लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आप इसका निकाल. सो हाइपोथेसिस इज सेंट्रल टू. कभी भी आपको रिसर्च करना है, जैसे आपको डिसर्टेशन करना है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू आस्क अ क्वेश्चन. आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए. बेस्ड ऑन दिस यू आर गोइंग टू डू रिसर्च. यू हैव टू फाइंड योर आउट योर ओन हाइपोथेसिस की मैं शुड आई से लाइक दिस इज लाइक somebody will say like mobile, too much of mobile will slow down the mental development of a child. Now, see, how do you know that means watching of more mobile will slow down the mental development? So you have to take a questionnaire and you have to study like this, like so you will understand like what is mobile, how it is being read. मोबाइल से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान है मोबाइल से, और क्या निकल के आता है मोबाइल का, टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है, गवर्नमेंट से कितनी फंडिंग है. एंड एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू फाइंड आउट इट्स इफेक्ट ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट. सो चाइल्ड डेवलपमेंट में इधर सही काम चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो बेस्ड ऑन दिस यू विल फॉर्म अ हाइपोथेसिस. अगर अगर सो लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, n इज इक्वल, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, a is equal to b. So अगर A and B बराबर है तो this is known as null hypothesis. The second is A is not equal to B. That means either A is greater than B or B is greater than. Okay, is it clear?
तो यहाँ से आपका रिसर्च का क्वेश्चन निकलता है. So you will ask a question, you will do research, you will form a hypothesis. The hypothesis can be a null hypothesis or an alternate hypothesis. Then you do an experiment, you analyze your result, you will find out the data, and then you will understand, say whether the hypothesis was true, the assumption was true, or it was false. Okay, and you will report your results. So this is the procedure. Okay, this is the procedure. Okay. क्या हुआ? Just check. I am unable to move the slides. Now see, hypothesis, how do you define? So hypotheses are basically assumptions or predictions about the relationship between two or more variables or a group based on a theory or previous research. So whether there's a relationship between the two variables or not, whether females are more fitter than males, or whether smoking will cause cancer, or means obesity will lead to cancer. So there are different type of questions. Accordingly, you make the assumptions. So hypotheses are what? They are predictions about the relationship between two or more variables based on a theory or previous research. So they are assumptions or theories that a researcher makes, and they are being tested. So why are hypotheses important? Because hypothesis, in other words, is a belief or a prediction about an eventual outcomes of the research, जो आने वाले टाइम में होने वाला है ना. तो उसके बारे में आप एक assumption निकाल लेते हैं, आप एक टिप्पणी कर लेते हैं. So that is there. And why do we need to have a hypothesis? So that we can direct our observation, we can identify like which variables are being examined, we can find out the relationship between those variables. And then when we try to see it from a population perspective, we know like what has to be done and what not has to be done. Okay, so it is the importance of hypothesis. So hypothesis, what are the function? It can basically estimate your population characteristics. तो आपका population का characteristics बता देगा. It can correlate the variables between each other. It can display differences between two or more population, and it can basically possibly show cause and effect relationship. Means having this problem is going to have this type of problem in a later stage. So cause and effect relationship. So based on these are the functions of hypothesis. Is it clear? Yes, any doubt? Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, so symbols used in hypothesis. So either we used, what are the symbols? So we use the symbol of population, P, sample hota hai, S, small s is the sample. Okay, and so population bhi hai, sample bhi hai. Population is the larger unit, sample is a smaller unit. Statistical inference, आप क्या समझते हैं? Parameter, parameter is again a variable. Statistic, when the parameter is for a sample, it is known as statistic. Like for example, mean, which is known by M. Okay, and then mu means the population mean. A is the significance level. Significance level can be to less than 0.05. So alpha is the significance level. जैसे टाइप 1 एरर ना, टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या है मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा. ओके,
and then आपका 0.05 level पे कर किया तो p value is less than 0. P is the probability value. Probability value means like how much is the chance, like it happened, just like for example, suppose the p value we write it as say p is equal to 0.05. P has to be less than 0.05. Now suppose the value came out to be p is equal to 0.0013. That means 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. 4. Okay. So that means out of 10,000, maybe if the value 13 people, in the 13 people, the value has come out just like that. Okay. Not because of intervention. So that means out of 13, out of 1,000 times, 13 times. So this is nothing. So that means every time when you are going to do this, the added advantage you will always get. This is the meaning of p value. Is it clear? Is it clear to everyone? So p is equal to, p is less than 0.05. Okay, so that means, so I told you A is equal to B, that is null hypothesis, and A is not equal to B, that is means A is greater than B or B is greater than A, which is the relationship between which is the null hypothesis and the alternate hypothesis. So when A is not equal to B, that means A is greater than B or B is greater than A. That is an alternate hypothesis. Is it clear? Have you understood the difference between alternate hypothesis and null hypothesis? Yes, Harris. Yes. Yes, Harris. Have you understood? Yes, sir. I have just joined, sir. Sorry, sir. I just came back from No, work. no issues. Have you understood that now the difference between null hypothesis and alternate hypothesis? This is what I'm Uh, explaining. I will just explain again, okay? okay, Now sir. suppose I am saying null hypothesis says that A is equal to B. Okay, that means, like for example, in osteoarthritis, drug A and B are same. Whether you give drug A and B, they will produce the same effect. So this is null hypothesis. That means both are equal. Alternative hypothesis says A is not equal to B. Whether A is greater than B or B is greater than A. Okay. So that is alternate hypothesis. So using a test, we need to find that out. Is it clear? That's why I said A is equal to B, that is a null hypothesis. A is not equal to B, that is alternative hypothesis. That is either A is greater than B or B is greater than. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. 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 Why is not getting work? क्या हुआ भाई, ये हैंग हो गया क्या?
Okay, then what are the two different type of hypotheses? One is called the research hypothesis and second is known as the statistical hypothesis. So research hypothesis means it's a statement between two variables, okay? Like graduates who read the text in research methods will score more marks as compared to those texts, those students who have not read the research methods, okay? So that is a directional. Then one is the directional or a non-directional. That means which is giving you a particular direction. So again, in classification, they should know that there is a directional hypothesis and non-directional hypothesis. Okay, so directional hypothesis will give you a direction. Non-directional hypothesis which does not specify what type of a relationship these things are having. And then we are basically okay. So research hypothesis is based on theoretical grounding for the study, previous results and clinical experiences. So जिसके basis पे आप एक assumption बना लेते हैं, yes, whether this is going to work, what are the previous studies or the findings and what are the clinical experiences. Second is called the statistical hypothesis. Statistical hypothesis are the mathematical hypothesis because उसको mathematically आप deduct करते हैं, आप उसको prove करते हैं depending on the p values. So statistical hypothesis will have two consideration, null hypothesis and alternate hypothesis. Null hypothesis I told you A is equal to B, and alternate hypothesis A is not equal to B. That's why it is written mu naught and mu zero. That means mu is basically the mean of group 1. Mu 2 is the mean of group 2. Alternative is mu 1, H1. That means H1 is an alternative hypothesis. That means either H1 is greater than or mu1 is greater than mu2 or mu2 is greater than mu1. That is alternative hypothesis. So H1 is alternative hypothesis, H naught is basically a null hypothesis. So if the null and the alternative hypothesis is same, then what is the purpose of doing a research? So this is the meaning. Is it clear? Is it clear to everyone? Any doubts? So null hypothesis always implies that there is no relationship or statistical difference between the variables, whereas your alternative hypothesis will tell you there is a difference. Okay, this is the simple terms. Is it clear? Okay. ये सारे समझ आ रहा है बेटा? प्रिया, प्रियोबाला, Yes, sir. शाली. Okay. Yes, प्रियोबाला समझ आ रहा है? Any doubts till now? Yes, sir, clear. Okay. So null hypothesis is H naught. That means all are equal. Suppose both the drugs, there is no difference. Suppose both the drugs, you are comparing between two drugs, you are comparing between two methods, you are comparing between two social aspects. So there is no difference. Similarly, alternate hypothesis say there is a difference. Okay. Now, how much is the difference? That only time and your statistics, because that will be known by statistical testing. So in as far as the null hypothesis, I told you there's no difference, okay? And there's no difference in the comprehensive test scores of the. So like if we are take an example, is there any difference between the test scores of people who read the text and who did not read that text from the lecture? So you will say whether you read it from the book or you don't read it, still you will get the low marks. The other person will say, no, 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 who has read from the text and who have not read from the text, there's a difference in the marks. Who will read from the text, they will get more marks. Who will not read from the text, they will get less marks. So this is the alternative hypothesis. So research hypothesis should not be confused with a statistical hypothesis. Like I told you, the statistical hypothesis is divided into null and the alternative one. Okay. And null hypothesis says there is no difference. Alternative hypothesis says there's a difference. So we need to test them, and for testing them, so that means you have a population. From subpopulation you have the data, and from the data will give rise to statistic. Okay, so whatever data you are collecting from the sample, it is known as statistic.
And from the statistic, when you compare it at a larger level, it is known as parameter. Okay, so that is so when you test a hypothesis, we use you will frame a hypothesis, you will take the data, then you will do the sampling strategy, whether you are taking different types of probability sampling, non-probability sampling, even probability sampling. You take a randomized control sample, randomized sampling, you take a stratified sampling, you take a systematic sampling, that will be dependent, or you take a purposive sampling, you take a quota sampling, you take snowball sampling. So depending on the different methods, you are going to see. And then we use different type of tests to test it. For example, we use ANOVA, chi-square test, Kruskal-Horris test. So these are different type of tests. So when you use ANOVA, so dependent on whether your data is nominal or ordinal. If your data is nominal and ordinal, then the outcome measure that nominal and ordinal, then the outcome that the whatever is the test, you will always take a non-parametric test. But if your data is means your interval and ratio, and with a proper this thing, then we are going to use ANOVA, one way ANOVA, two way ANOVA, t-test. Okay, so that is the. Is it clear? Are the type of tests clear to everyone? Where do we use what? Sir, one question, sir. Yeah. Sir, do we need to go in detail about chi-square, t-tests, and all those ANOVA testing? No. Only one or two tests. So you should know about chi-square and ANOVA. That's it. I will teach you. About no, with regard to the exam, sir. Yeah, with regard to exam, but not only you have to read only the theoretical aspect. There will be no questions based on this. Okay, okay. Thank you, sir. Oh. Okay, so we have ANOVA. So each of these procedure will have a statistic. I will tell you, like from the sample, you'll get a statistic from the statistic can be used in order to make an inference based on your sample. Okay, so this is the. And then you when you also do, you find out two types of error: type 1 error, type 2 error. Type 1 error says that what happens when the tested hypothesis is falsely rejected. So type 1 error says what happens when the tested hypothesis is falsely rejected. Okay, it is when you say you found something, but that something is really an error. Type 1 is a false positive. So now see, suppose you had, like, so I will give you an example. You had corona, you had corona, and the test is also saying, so I will take two samples, just a minute. For condition. Yeah. So you said you had corona and test. So you had corona, and the test is also, this is a test, and this is corona. So you said corona positive, not corona. So you have corona, and the test is also saying you have corona. Second is you don't have corona, and the test is also saying you do not have corona. And then the other condition, you have corona, but the test is saying you you do not have corona, but the test is saying you have corona. And you do not have corona, you have corona, but the test is saying you do not have corona. So that means false positives, false errors. So when, like for example, you have corona, you do not have corona, but the test is saying you have corona. That means you did not, like a thief, he did not steal, but the judgment passed was he stole. So that means he was innocent, but the label was put. So this is false positive. Is it clear? And similarly, false negative, that means the person actually had corona, but the test showed he did not have corona. Okay, is it clear? So type 1 error says it is false positive. Type 2 error says is false negative. Type
1 is false positive, type 2 is false negative. Okay, false positive, false negative. So type 1 is false positive, type 2 is false negative. Is it clear? Any doubt? Yes, is it clear? Please tell me. Yes, Harris, sir. Priyobala. Yes, sir. Yes, sir. It is clear. But, sir, in some statistics books, Hmm. type 1 is defined as a false negative. So No, I'm no, no, no. confused with that, sir. False positive, false positive, false negative. Okay, sir. Okay. Still, I will again check it. Okay. So it is false positive, false negative. I'll just check it now. Just a minute. Let's check. Yeah, it's always false positive. Okay. So type 1 error is always false positive. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Which means the person actually did not have disease, but the test showed that it has got disease. That's why it is called false positive. Okay. Here the person was innocent. So now suppose if a person did not had corona and the test said, the person said he did not had corona, but the test said he had corona. And there is another case where the person had corona, but the test said he did not had corona, which is more dangerous. False positive, false negative. Which is more dangerous? Yes. Yes, Priyobala, which is more dangerous? Haris. False positive, false negative. False negative, sir. False negative. Yes. Okay. So this is how you need to remember. Okay. So alpha is the level of, so alpha is always false. Type 1 error is also denoted by alpha. So type 1 error is alpha. Okay, so alpha is the degree of risk that you would accept in advance of conducting a study that you will find to be an error. So that's why it is said to be alpha. So is a level of probability. So how much level of probability you are saying that it can be accepted. And then second is beta. So beta is basically 1 minus alpha is known as beta. It is again. Okay, so this is there. So alpha and beta. So alpha is basically type 1 error, beta is type 2 error. So we basically is making addition that in type 1 H naught is true and H1 is true. So you have to reject, ideally you should reject H naught when H1 has to be supposed. So that means null hypothesis was true. So null hypothesis is true and and alternate hypothesis is true. So in the use, and so you should reject the null hypothesis or you should fail to reject the null hypothesis. Okay, so that's why type 1 error is false positive. What does false positive means? False positive means that actually
Like the person was not guilty, but he was proved to be guilty. Okay, so that is your H0 and H1. So hypothesis testing is also known as significance testing. So you do it by using a sample. So Z sample can be used as a test. And you have to break the entire thing into different procedures. Like I told you, null hypothesis, alternative hypothesis, test statistic. And then you've got a p-value, you've got interpretation. What is that? Like I told you, how will you read p-value less than 0.05? What is the significance? Okay, so these are the different steps. You can leave this critical value, obtained value, no need for this thing. Okay, alpha, once you have understood, you can leave this Z statistic. P-value is important. P-value, I've told you what is the meaning of P-value. P-value is the probability value. So P-value, the probability of the true value when H0 is true. So that is P-value. So this is corresponding to the area under curve. So AUC, area under curve method in the tail of this normal distribution curve. So how much of the market is in the tail of the normal distribution curve? So that is give your P-value. You can leave this. You need not to go into. I've told you what is the meaning of p-value. So p is less than 0.05. If the p-value is less, suppose the value came out to be 0.001. So whether it is statistically significant or statistically insignificant. Yes. If the p-value is 0.001, whether this is statistically significant or not. Yes, who can tell me? P is, if the p-value is 0.001. If the p-value is equal to p is equal to, if the p-value is, this is the meaning, no? 0.001. So is it statistically significant or insignificant? Yes. Why nobody is answering? If the p-value is 0.001. Yes, Harris. So it's significant. Significant. Yes, very good. Because the 0.001 is less than 0.005. 0.05. Okay. So that's why it is significant and the p-value is automatically given. Yes. Okay. So, and in the end, you will make the conclusion. So I think like till now, till here, you should understand. And parametric and non-parametric will do in the next class. Okay, maybe after 2 days, so that it remains fresh with your mind. What is ANOVA? So with that will be over. That is the last chapter. Okay, is it clear? Sir, can we have the next class just before the exam, sir? Because we'll be traveling. Yes. Yeah. I will have the class on Wednesday, so that I will make a revision of all the 6, 7 chapters, so that everything is fresh in your mind. And then you read it and you directly go and give the exam. Okay, is it clear?